Yeah, hello everyone. We will be discussing some important question answers for the subject machine learning using Python. It will be consisting of MCQs along with long answer type questions. So all the questions will be important for you. Go through them. As in your class, I have discussed all the topics, so don't leave them. These are just the important question answers that you should not skip, or that you have to go through twice or thrice many the numbers you require to understand and grasp the topics. Okay. So first question is these are the MCQ questions. Which branch of AI enables computers to learn from the data automatically? So that is machine learning. See, these questions are to help you to understand that what type means exactly. MCQ will be of the type like the what is the complex level, or like that you can understand. So it is not the case that exactly the same MCQs may you will get in the exam. So that's how. Let's start again. So first question you got the answer is machine learning. Second, which type of machine learning uses label data? Supervised learning. We know that. Which type of learning works without label? Unsupervised. Linear regression predicts continuous numerical values. Remember. Okay. Then which algorithm is mainly used for classification? Among the given options, the decision tree is the correct option. Entropy measures what? Impurity. Okay. Information gain is used to what? In decision tree, you know that the splitting criteria, in the splitting criteria, we use the measures like and this information gain, entropies, right? K-means is used for what? Clustering. PCA stands for principal component analysis. Option A. Then which library we use in for ML in Python? Machine learning के लिए हम कौन सा library use करते हैं? That is scikit-learn. Random forest is based on what? Multiple decision tree, and then we take the what? Average or base out of them. Average means we try to, if the values are obviously when they are continuous, then we take the average. But in the case of decision trees, you can say this is based on the voting, right? So multiple decision trees are there for a random forest evaluations. Then which algorithm uses Bayes theorem? Naive Bayes. Support vector machine is mainly for classification. A priori we use for association rules. And among this, which is not supervised, obviously K-means, right? Then precision. What is the formula for precision? Don't forget it. I explain in details about this TP, true positive, false positive. These things we have discussed. So precision is what? TP divided by TP plus FP. All are positive, but the case is that true positive and false positive. So true positive divided by true positive plus false positive. ठीक है? तो प्रिसिशन का फॉर्मूला एक बार फिर से बोलता हूं. TP divided by TP plus FP. So correct positive prediction among the all predicted positive. सारे predicted positives में से करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन का जो वैल्यू है, रेशियो है, आप बोल सकते हो वही प्रिसीजन है. ठीक है. देन रिकॉल क्या है? रिकॉल इज इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफ एन. तो एबिलिटी टू फाइंड एक्चुअल पॉजिटिव. अब हम क्या कर रहे हैं? ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव. जो निगेटिव हमने फॉल्सली आइडेंटिफाई करा, असल में वो क्या था? पॉजिटिव था. ठीक है. तो सबको जोड़ लिया है हमने अभी. सो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय true positive plus false negative is the recall. So recall is the ability to find actual positives. F1 score क्या है? F1 score combines both precision and recall. Then overfitting means learns training data too much. Okay. Then which matrix evaluates overall correctness? Accuracy matrix evaluates overall correctness. NumPy we use for numerical computation. तो इसलिए तो NumPy का full form भी आप जानते हो, न्यूमेरिकल पाइथन, राइट? न्यूमेरिकल कंपटीशन के लिए हम यूज करते हैं. पांडा को हम यूज करते हैं डेटा हैंडलिंग के लिए. सो pandas is mainly for data handling. Matplotlib is for visualization. एंड which is ensemble learning. ensemble learning बहुत सारे को हमने कंबाइन किया था, राइट? आपको याद होगा शायद. तो दैट इज रैंडम फॉरेस्ट. K in K means indicates what? Number of clusters.
gain ratio is used in what? C4.5। ये सारे डिसीजन ट्री का एग्जांपल्स है। गिनी इंडेक्स हम कहाँ यूज करते थे? कार्ट में। याद रखना, गेन रेशियो C4.5 में यूज करते हैं, गिनी इंडेक्स हम कार्ट में यूज करते हैं। हाइपरप्लेन बिलोंग्स टू सपोर्ट वेक्टर मशीन। मिसिंग वैल्यूज में बी हैंडल यूजिंग VLNI। ये जो आप करते हो ना, ये हम पाइथन के एग्जांपल्स में हमने देखा था। ठीक है, VLNI इज यूज फॉर मिसिंग वैल्यूज, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। देन कॉमन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट रेशियो, हमेशा ट्रेन के लिए ज्यादा, टेस्ट के लिए कम, सो 80:20। ठीक है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपका पैटर्न नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको आइडिया देने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हूँ। व्हाट इज मशीन लर्निंग? एक्सप्लेन इन एग्जांपल। मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ AI that enables computers to learn patterns from data and improve performance automatically without being explicitly programmed for every task। राइट। सो क्या होता है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम एग्जैक्ट रूल्स लिखते हैं, बट मशीन लर्निंग खुद सिस्टम जो है वो डेटा को स्टडी करते हैं, डेटा से ट्रेन होते हैं, उसके बाद पैटर्न को आइडेंटिफाई करके रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि स्पैम ईमेल डिटेक्शन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, वेदर फोरकास्टिंग, स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन। याद है आप लोगों को मैंने बोला था मशीन लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर के लिए होता है SDLC, इसके लिए होता है MDLC। सो वर्किंग फ्लो नॉर्मली क्या होता है? इनपुट डाटा, ट्रेनिंग, देन पैटर्न लर्निंग, देन प्रेडिक्शन। पाइथन का एग्जांपल बोलेंगे तो हम, मैं दिखा सकता हूं आपको यहीं पे। गोस टू दिस, सपोज ए लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ये एक्स वाई का डाटा ले लिया। ठीक है, तो x का ये वैल्यू के लिए y का वैल्यू ये है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है, 4 के लिए 8 है। तो क्या हो रहा है? तो वैल्यू जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मॉडल हमने लिनियर रिग्रेशन को कॉल किया। ठीक है, क्योंकि वो यहीं पे है, एस्केलान से हमने लिया है, और उसके बाद फिट फंक्शन में एक्स वाई का वैल्यू फिट फिट किया, और उसके बाद हमने 5 के लिए देखा देखा ही पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया है। 2 ट्वाइस हो रहा है, तो आंसर आपको मिल गया 10। ठीक है, वेरी गुड। देन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग, वेयर वी यूज लेबल डाटा, इनपुट एंड आउटपुट आर यू ऑलरेडी नो। एज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मार्क्स से हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि पास और फेल। अनसुपरवाइज्ड में अनलेबल डाटा, तो सिस्टम फाइंड्स हिडन पैटर्न्स। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कस्टमर ग्रुपिंग। रीइंफोर्स्ड लर्निंग में लर्न्स बाय रिवार्ड एंड पेनाल्टी। एग्जाम्पल रोबोट नेविगेशन, गेम AI, लाइक दैट। थर्ड क्वेश्चन मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, these are some examples of the questions, you just focus on the topics। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, लिख खुद ही सकते हो, बट टॉपिक्स को समझना जरूरी है। ठीक है। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन विथ एग्जांपल। क्लासिफिकेशन क्या करता है? प्रेडिक्ट कैटेगरीज like spam or not spam, pass or fail. Regression, what it does, it predicts numerical value like salary prediction, temperature prediction। ठीक है। एग्जाम्पल लिनियर रिग्रेशन का दे दो। लिनियर रिग्रेशन प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस आउटपुट यूजिंग वन वेरिएबल, और फॉर्मूला था y इक्वल टू a+bx। कभी कभी इस a b की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बट रिमेंबर a इज इंटरसेप्ट, यस, b इज स्लोप। अगेन फिर से बोल रहा हूं, y इज इक्वल टू, जैसे कि आप फॉर्मूला लाइन का इक्वेशन याद है, mx+c। राइट, m क्या था? स्लोप था, और c क्या था? आपका इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू a+bx, so a इज द इंटरसेप्ट, b इज द स्लोप, एंड y इज द आउटपुट, x इज द इनपुट। एग्जाम्पल एक्सपीरियंस से सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं हम। पाइथन का एक एग्जाम्पल लिनियर रिग्रेशन का फिर से देखते हैं। ये देखो, दिस इज द एग्जाम्पल। आई एम रनिंग इट, रन सक्सेसफुली विद इन दिस, मतलब ये आंसर आ गया 40। तो क्या कर रहे हैं हम? लिनियर रिग्रेशन के लिए फिर से बोल रहे हैं, sklearn डॉट लीनियर मॉडल, वी आर इंपोर्टिंग लिनियर रिग्रेशन। एक्स वाई वैल्यूज दे के रखा है, मॉडल को मतलब हमने लिनियर रिग्रेशन को कॉल किया। ठीक है, उसका मॉडल को ट्रेन किया एक्स वाई से, एंड प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू दे दो। ये वैल्यू से 1 से 10, 2 से 20, 3 से 30, तो क्या हो रहा है? 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने प्रेडिक्ट करके देखा 4 के लिए, तो 4 का वैल्यू 40 हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन क्या होगा? व्हेन इट प्रेडिक्ट्स आउटपुट यूजिंग मल्टीपल इनपुट। इसमें एक ही इनपुट था, x, राइट। यहाँ पे अगर मल्टीपल x रहेगा तो वो होगा आपका मल्टीपल, अगर इनपुट रहेगा तो वो मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन।
तो y is equal to a plus b1 x1 plus b2 x2 plus bn xn. एग्जाम्पल लाइक मार्क्स प्रेडिक्टेड फ्रॉम अटेंडेंस से भी ले रहे हैं, असाइनमेंट एंड इंटरनल एग्जाम। जैसे आप लोगों का हमने इंटरनल मार्क्स क्या बोलते हैं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम अटेंडेंस का कुछ परसेंटेज ले लेते हैं, असाइनमेंट का ले लेते हैं और टेस्ट का ले लेते हैं, इन सबको मिला के आपका इंटरनल मार्क्स कैलकुलेट होता है, राइट। So that will be like your multiple linear regression. We try to predict the value based on multiple inputs. So used when many factors affect the output. Then discuss measure real world applications of machine learning. We have used machine learning in many cases, and we are going to use, of course, like healthcare, disease prediction, medical image analysis, drug discovery, as for example, tumor detection from X-rays, finance में fraud detection, credit scoring, stock prediction, as for example, detect suspicious bank transactions, recommendation system like Netflix, Amazon, YouTube, ये सब recommendation system use करते हैं, ठीक है। So like recommending movies based on history. Then advantages and limitation of machine learning. Advantages like automation, fast prediction, handles large data, improves with experience. हाँ, जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा, ट्रेनिंग हम जितना कराएंगे उतना ही आपका आंसर सही रहेगा। And then useful in many industries. We use so everywhere nowadays machine learnings. Limitation is that we need large data. It is expensive in case of training, means you need a very good system. Otherwise, training takes a lot of time. Good system means configuration should be good. Sometimes we need graphics also. And problem is that overfitting problem may occur, right? And this happens usually when noise are there in the input training data, hard to interpret and can inherit bias if data, ये पूरा data dependent है। data में अगर आप bias data रखा है, जैसे कि आपने suppose in case of US वगैरह में क्या होता है आपका, suppose white के लिए हमने ज़्यादा preference दिया, black के लिए less, so like these data are used to train the model, then of course you cannot expect a good neutral output. It will be an inherited bias. Decision tree, explain decision tree, right? Decision tree uses a tree-like structure. It has root node, decision node, leaf node. Okay, but example में explanation के साथ लिखना जैसे मैंने क्लास में कराया था। So as for example loan approval, तो आपको एक एग्जांपल में फिर से दिया हूँ। डिसीजन ट्री हम क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn ट्री sklearn.tree, वहां से इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर, एक्स वाई का वैल्यू रख लिया हमने 1 2 3 4 0 0 1 1. Now model में decision tree classifier, we call it and we feed the data and then we try to predict another ones like 3, the value will be like say 1, ठीक है। और वो एग्जांपल जो मैंने क्लास में दिया था, like when which customer is going to buy the laptop and who is not, so you can just draw a diagram there and you can fix here, right? The diagram is needed, so try to explain with diagram. Then explain entropy. Entropy, I already told you, it measures impurity. Formula is that minus pi log 2 logarithm of pi to the base 2. So ये formula at least ऐसे याद रख लो, minus pi log pi to the base 2. Summation for all the values, of course. Then example like mixed data, high entropy, pure data, low entropy. ये impurity को measure करते हैं entropy. तो pure data के लिए entropy value हमेशा लो होगा, एंड मिक्स डेटा के लिए एंट्रोपी वैल्यू हाई होगा। सो वी यूज इन डिसीजन ट्री स्प्लिटिंग एंट्रोपी। okay, then explain information gain, measures reduction in entropy. Formula is like entropy before minus entropy after. So higher gain means better split. Always remember, gain is the measures of the reduction in the entropy. Entropy जैसे impurity को measure कर रहे हैं, ठीक है। High entropy means high impurity. Okay, so similarly, but in the case of information gate, it measures reduction in entropy. So gain is what? Entropy before minus entropy after. So higher gain means better split. Then we can compare the decision trees types like IDT, C4.5, and CART. IDT uses entropy, C4.5 uses gain ratio, and CART uses Gini index. I'm telling it again. IDT uses entropy, C4.5 uses gain ratio, and CART uses Gini index. Then what is naive based? ठीक है, naive based on the
You know conditional probability. I explain in details in the class. Now, just to remind you, it uses probability. It is a probabilistic classifier, and the formula is P AB, means this is a conditional probability. Then PBA cross PA divided by PB. आपको इसे पढ़ना चाहिए. Conditional probability of B with respect to A into PA divided by PB. As for example, spam filtering, and advantage is that it's very fast and good for text, but limitation is that it assumes independent features. So this is a naive-based classifiers which use naive-Bayes theorem. Then clustering. Explain clustering. It groups similar items. Obviously, clustering falls under unsupervised learning. It has no knowledge about the data, right? It works on the basis of homogeneity or similarity. As for example, customer segmentation, image segmentation, document segmentation, like that. Then we have a famous clustering algorithm, k-means. So the formula, that steps of the algorithm, like I mentioned in the class, you go through that proper, but just to remind in short, first you have to select k, then assign points, update the centroids and repeat. तो k centroid ले लिया अपने randomly, उसके बाद values जो नजदीक है, whoever the points who are close to that one particular center, we assign them, we create the centroids, means groups or clusters, and after that we again calculate the mean. If so we shift the centers to the mean, and then we calculate the distance of every point to those new centers, and wherever it is near that point is then assigned to that particular clusters. तो इसके लिए हमने Python का एक example आपको दिखाया. So this one we have taken 1, 2, 2, 3, 8, 9, 9, 10. These are the data. We use 2 clusters as centers. Okay, number of clusters 2. Then we feed the data. Levels are like this, 1, 0. Then we can show you with the help of scatter plot, right? So these are a few points. Number of clusters 2, feed the data, levels, and then we divide the 2 clusters like blue and red. So you can see this is a blue, this is a red. These are for few points. For more points, you can see a better clusters, right? Very good. Then k-means visualization ये हो गया आपका scatter plot के through दिखाया. Oh, what is the difference between k-means and k-methods? So k-means use centroid, but k-method use actual point. उस data में से ही एक point को center मान के चलते, but k-means में centroid लेते हैं, right? K-methods handles outliers better than the k-means too. So k-means से ज्यादा k-methods outliers को detect handle करने के लिए use कर सकते हो. It performs better than k-means with respect to outlier detection. Then explain the dimensionality reduction. So dimensionality reductions mean there are so many features. Out of that, we use only few of them. We try to reduce the number of features. So for that, we use PCA. So why we do that actually? Benefit is that it fasters the training, it uses less memory, and it is used for the better visualizations. So PCA converts many variables into fewer components, as for example, face recognitions. So just to show you one Python example for that. So you can see that here also importing PCA from where? sklearn the decomposition, because we are trying to decompose the data. And remember, PC also falls under the unsupervised learning, right? Then we are importing NumPy SNP. So from NumPy, we have taken these values. NumPy हम use करते हैं array के लिए, right? Original data को print किया, original shape, then PCA and components 1, transform, PCA fit transform, then transform data and transform data shape. तो PCA को हम फीचर्स को रिडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं. ये जो ओरिजिनल था 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो how many data are there? So this data, out of this data, 3 out of these 3 data, we have 2 features, but after transforming, we get this value where we have only 1 feature. So we have reduced 1 feature using PCA. You can see that. So then we can we have another classification algorithm, support vector machine. Okay, support vector machine finds the best hyperplane and it separates the classes with maximum margin. ठीक है, maximum margin होना चाहिए. As for example, email classification के लिए हम use कर सकते हैं. Support vector machine is again important. Then we use ensemble learning where we combine multiple models, like we have already got random forest, then boosting,
ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट से आपको बहुत सारे एल्गोरिथम वी हैव डिस्कस इन द क्लासेस, गो थ्रू दैट, बट डोंट फॉरगेट अबाउट द मेन, दैट इज व्हाट इज ensemble learning. So it is combining multiple models, at least these two examples, random forest and boosting. Then explain begging versus boosting. Begging, parallel training, reduces the variances, while boosting, sequential training, reduces bias. तो begging में parallel training होता है, ठीक है, ये वेरिएंस को रिड्यूस करता है, बट बूस्टिंग में सीक्वेंशियल, एक में जो इनपुट मिला, वो इनपुट जो लास्ट जो स्टेज का आउटपुट था वो इनपुट हुआ, और उसे हम परफॉर्मेंस को बेटर कर रहे हैं, ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेगिंग एंड बूस्टिंग, राइट. Then explain random forest. Random forest is again a many decision tree we are combining, and it is done with the help of majority voting, right? So you can see here, this is the random forest example. तो ये एग्जांपल याद रख लेना, X1234001 models. It's simple example I'm giving so that you can easily remember. ठीक है, you can take a screenshot, you just try to do that, and then just a minute. Okay, random forest with confusion matrix. Confusion matrix, just a minute, I'm showing you the confusion matrix. Confusion matrix के लिए भी हम यूज करते हैं आपका scalar matrix, import accuracy store, PRED, model prediction, confusion matrix YPRED, accuracy score. Confusion matrix is very much important. I hope you all know the definition of confusion matrix. यूज भी किया है प्रोजेक्ट में, ठीक है. Then we have a priori algorithm. Explain a priori algorithm. It find frequent items, right? As for example, bread जो खरीद रहे थे वो butter भी खरीद रहे हैं. Applications are like in shopping analysis, product recommendation. Then some technical terms associated with this a priori algorithm, like support. Support is what? Frequency. Formula was support transaction with A divided by 2. टोटल, राइट, कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी में वो आइटम्स को हम खरीद रहे हैं, लाइक ए के लिए, तो ट्रांजैक्शन विद ए डिवाइडेड बाय टोटल. डिफाइन कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज व्हाट? कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पार्टिकुलर रूल. उस रूल का कॉन्फिडेंस क्या है? आप याद रखना, ए पैरेलल एल्गोरिथम और एसोसिएटिव माइनिंग में हम हमेशा रूल्स निकालते हैं, ठीक है, प्रेडिक्शन रूल्स. तो उसका कॉन्फिडेंस निकालना है. कॉन्फिडेंस ऑफ ए इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए. इट मेजर्स रूल करेक्टनेस. देन डिफाइन लिफ्ट. लिफ्ट ऑफ ए इंप्लाइज बी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस ऑफ ए इंप्लाइज बी डिवाइडेड बाय सपोर्ट बी. If lift is greater than 1, then strong rule. अगर एक से ज्यादा वैल्यू होगा तो वो रूल स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, ठीक है. कंफ्यूजन मैट्रिक्स में पहले ही बोला, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है. प्रेडिक्टेड प्लस प्रेडिक्टेड नेगेटिव, ठीक है, एक्चुअल प्लस एक्चुअल नेगेटिव, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, ये जो हमने बताया था ना, तो ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, ठीक है. फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये है वो एक्चुअली हमने प्रेडिक्ट किया है नेगेटिव, बट वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, ठीक है. देन फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव. इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्लासिफिकेशन. ये टेबल याद रख लेना, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव. सो एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर का फॉर्मूला एक बार फिर से बोल रहा हूँ. एक्यूरेसी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल. प्रिसिशन इज ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. रिकॉल का रिकॉल इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. तो यहाँ पे सिर्फ हम ट्रू में डिवाइड, ट्रू वैल्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं. F1 स्कोर इज द एक्चुअली हार्मोनिक वैल्यूज. हार्मोनिक मीन्स तो 2 into प्रिसिशन क्रॉस रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसिशन प्लस रिकॉल. देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक एग्जांपल याद रख लेना. लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, तो ये तो आपको याद ही रह गया होगा. स्केलर डॉट लीनियर मॉडल, इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसिशन स्कोर, रिकॉल स्कोर, F1 स्कोर. यही एक्स वाई वैल्यू का सिंपल वैल्यू ले लेना, 1 2 3 4 5 6 0 0, कितने बार वैल्यू उसके लिए हो रहा है, y के लिए 0, 2 के लिए 0, like that, whatever you choose. So we have called logistic regression, we have fitted the xy data, then we have predict some value, and then confusion matrix, right? Precision score, recall score, F1 score, right? Then pandas में हम pandas को जो आप यूज करते हो डाटा फ्रेम के लिए, मेनली हम यूज फॉर डाटा फ्रेम, तो हमने यहाँ पे एक या सिंपल सा एक डाटा फ्रेम मार्क, जो डिक्शनरी के रूप में लिए हमने मार्क्स 60 70 80, ठीक है. ये डिक्शनरी है क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, पेयर्ड वैल्यूज है, ठीक है, ये की, ये वैल्यू.
तो उसको कन्वर्ट कर दिया डाटा फ्रेम में, df इक्वल pd डॉट डाटा फ्रेम फंक्शन है, उसमें डाटा को पास किया, तो आप क्या हो गया, ये df डाटा फ्रेम हो गया। देन df डॉट प्लॉट फंक्शन काइंड बार, मतलब किस टाइप का आपको प्लॉट चाहिए, से बार चाहिए, बार इज यूज फॉर कंपैरिजन, प्लॉट डॉट शो, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेस इट, राइट। सो ये आपका क्या हो गया, 0 1 2 जो वैल्यूज आपने लिया था 80 में सबसे ज्यादा है, तो लाइक दैट। सो आप सोचते हो कि प्लॉट 200 हम क्यों यूज करते हैं, प्लॉट 200 हम यूज करते हैं तो अल्टीमेटली शो, देखो अभी प्लॉट 200 को हम अच्छे से नहीं दिया है तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, ये तो हम पुराने वाला यूज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज प्लॉट डॉट शो इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पुट इन, राइट। नाउ देन एक्सप्लेन ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग कब होता है, मॉडल मेमोराइजेस ट्रेनिंग डेटा, सो पोर परफॉर्मेंस ऑन टेस्टिंग डेटा, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया जा रहा है, बहुत ट्रेनिंग डेटा यूज करके हम ट्रेनिंग किया है, बट वो टेस्टिंग डेटा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। कैसे प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो ये, मतलब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, डाटा बहुत ज्यादा तो आपने ले लिया था, बट उसमें नॉइजेस थे, नॉइज को हटाना है, और ज्यादा डाटा यूज करो, ट्यूनिंग करो, वैलिडेशन करो, सिंपलर मॉडल यूज करो, तो ओवरफिटिंग नहीं होगा। Pandas, NumPy, scikit-learn, Matplotlib. So Pandas is used for tables and data frame, NumPy for arrays and numerical operations, scikit-learn for machine learning algorithm, Matplotlib for graphs and visualization, ठीक है। तो ये सब चीज हम क्या बोलते हैं, यूज करते हैं मशीन लर्निंग में। ये जो लास्ट वाला एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, इंपोर्ट pandas spd, इंपोर्ट matplotlib.pyplot_splot, डाटा ले लिया था mark 60 70 80, we have converted into data frame, and then we have plotting with the bar chart. Bar chart is used for comparison, and then finally showing it. So these are the important questions answer that you should not skip. All the very best. And for any question, any doubt, you can ask me. Thank you.